Jadi bisa kau lain. Yeah, I have. Sujana. It's जय जय श्री सुगंधर विकार धारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। this is the photo, right? हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जगदीश प्रभुपाद की जय। सुजनार बुधरादित पाद जुगम जुगधर मधुरंदर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं भजनोर्जित सज्जन संगपतिं पतितादिककारुणकैकपतिं गतिवञ्चितवञ्चकचिन्तपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् अति Rangjevidum vidutarikaham kritasimhabaram varanagatabalisasandrapadam pranamami sada prabhupada-padam vipulikrita-vaibhava gaurabhumam bhuvaneshu vikirtita-gauradayam dayaniya-danarpita-gaurapadam pranamami sada prabhupada-padam chira-gaurajanasraya vishwagurum guru-gaura-kishora-kadasya-padam paramadrita-bhakti-vinod-padam pranamami sada prabhupada-padam raghurupa-sanatana-kirtidaram dharanitala-kirtita-jiva-kavim kaviraja-narottama-sattva-padam pranamami sada prabhupada-padam kripaya hari-kirtana-murtidaram dharani-varahara-kadurajanam janakadhipa-vatsala-snigdha-padam pranamami sada prabhupada-padam saranagata-kinkara-alpataram
Vishnasan Prabhu, please come. Speak few words about Prabhupada. Jai Vishnasan Prabhu. Vishnasan Prabhu, he is the disciple of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Translate that in Chinese. He also. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Vashatyade Shatarine Namo Vishnupadaya Radhikaye Tadalani Srila Bhakti Vedanta Narayanti Namini Shri Guru Vandana Kori Tanara Charana Dori Shri Bhakti Vedanta Prabhupada Arayata Shiksha Guruta Sabe Vamsha Kalpataru Kripa Kuru Kuchaka Vishana Namo Mahavadanaya Krishna Prima Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Gurse Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kamtalada Kamta Namostute Tapta Kamsana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamani Hare Priye Shyama Sundar Shikanda Shekara Smera Hasa Murari Manohara Radhika Rasika Mam Kripa Supriya Charanam Kinkarim Kuru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So by the mercy of Shri Guru and Gauranga, we have come to this very astonishing holy place, Shri Tatak Parvat, where our Param Gurudev has established his Bhajan Kutir. And by the mercy of Shri Padman Maharaj, we are here today. So this is Tatak Parvat, a sand dune. When Shri Chaitanya Mahaprabhu reached Shri Jagannath Puri, he arrived in the temple of Shri Jagannath and he established his headquarters in Shri Gambhira, where we are going to go to this morning. And he gave different places to his associates. And of course, his main associate was Shri Gadadhar Pandit. So he gave as a residence place, this place here below, in a garden which was called Yam Tot. That there was a temple of Mahadev there. So it was called the garden of Yam Tot. And that is the residence of Shri Gadadhar Pandit. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada established that Shri Purushottam Gaudiya Math, and he had this Bhajan Kutir here. This is his Bhajan Kutir on top of Tatak Parvat. And as they were pure devotees, wherever they saw the nature, they felt like if it was a sand dune or a mountain, it was like Govardhan. So this Tatak Parvat was reminding Mahaprabhu, Shri Gadadhar Pandit and Shri Param Gurudev of Shri Govardhan. So what is the special contribution of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur?
As you know, Srila Bhaktivinoda Thakur was called the Satam Goswami. He was sent specially by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his very dear associates, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, Sri Gadadhar Prabhu, Sri Srivas Thakur Prabhu, and then the next generation, the direct disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami. They wanted that the service of the Brijvasi, which is done out of transcendental attachment for Krishna, Rag, they are all these Brijvasi Ragatmika Bhaktas, they have a strong attachment for Krishna out of pure love, without any tinge of fear or reverence. They love Krishna as their very own family members. So that love of Krishna, of the Brijvasi, was never distributed before. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to distribute that love of the Brijvasi. He came as Sri Chaitanya Mahaprabhu and started to reveal the love of the Brijvasi. Then after many years, through Sri Rupa Goswami and the other Goswamis, he gave the transcendental literature to explain about that Brajaras. And then that order was passed down through our Guru Parampara. And finally, in the recent times, that message was given to Srila Bhaktivinoda Thakur to revive. Everything was almost lost. And so much deviation was going on. So Sri Gaur Nityananda Prabhu, Gaur Gadadhar Prabhu, they invited and requested Srila Bhaktivinoda Thakur, their very dear associates, to come in this world and revive the Sankirtan movement, and especially the preaching of this message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Bhaktivinoda Thakur started to revive everything. Everything was lost, like at the time of Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Rupa Goswami and Sanatan, you revive everything in Braj, all the holy places and the scriptures, because both are necessary. We can see with the eyes, but unless we hear the message from the transcendental Vaishnavas, it's not possible. So the Grantha, the books are very important. So they wrote the books. So at the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, same thing happened. That's why it's called the Satam Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, because it did the same work as the Goswamis did, reviving rediscovering all the early places, manifesting them again, and rewriting all the scriptures and establishing vigrahas here and there, the lost vigrahas. So that's why it's absolutely in a proper way addressed as the Saptam Goswami, the seventh Goswami. So Srila Bhaktivinoda Thakur revived everything. He wrote in a very simple language, Bengali, so that everyone could understand the message of the Goswamis. And he revived everything in Navadvip. But then that message needed to be spread now. He revived everything. We are coming from Mayapur, where we had the parikrama and the beautiful utsav of Gopurnim. So we saw how Yogapit was manifested again. All the different Lilastan of Sri Sachinandan Gaurari were manifested again. So then, now it was the big necessity that this message must be spread now all over the world, because this is the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu came to release the nectar of the love of especially Srimati Radhika, but he wanted to distribute also the path of loving service to Radha and Krishna to the whole world. Premaras, Niryas, Korite Asvadan, Ragamag, Bhakti Loke, Korite Pracharan. He came for two reasons, to release himself but to distribute it also. So Bhaktivinoda Thakur was very anxious also, how are we going to distribute it? So he prayed to Sri Sachinandan Gaurari, to Radha and Krishna, please send me
one of your very dear associates to spread and help me in fulfilling the desire of Satchidananda Gaurari. So came in this world from the transcendental world, from the direct associate of Srimati Radhika, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bimal Prasad, his young son. He was born here in Jagannath Puri. We're going to go also to his house, the house of Bhaktivinoda Thakur on Grand Road, where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was born from Srila Bhaktivinoda Thakur. So Srila Bhaktivinoda Thakur was like the transcendental architect. He defined all the details of this movement of Sankirtan in the modern age. He made all the description, the definition of everything, of the Namahat, the market of the holy name, how to develop our love for Krishna. Everything was defined in his books. And he asked his son to distribute it all over the world. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was like the engineer who really manifested the architecture of Srila Bhaktivinoda Thakur. He started the Gaudiya Math and with many branches all over India and even abroad, sending devotees all over the world. And especially he sent my Guru Pada Padma, Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, my Guru Maharaj. Especially told him, you please go and distribute that message in the English language. So my Guru Maharaj was like the transcendental contractor. You have the architect and the engineer would, manifest everything technically speaking, how we can have a strong structure. And then we need someone to build the structure. So that was the mission, especially of my Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Started with all his armies making devotees to build that structure, and that structure has been built everywhere, all over the world, so many temples. And then Prabhupada, my Guru Maharaj, was given that instruction by his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So to distribute also construction of that work was going on, but with a speciality of by these books, and through those books, by giving that Vrajaras also that Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to distribute all over the world. So there was a great need because all devotees were very young and immature, so at that time it was not possible to develop the essence of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So at that time, Srila Prabhupada, before he left this world, he required Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, my beloved Shiksha Gurudev, dearest friend, that you please take care of my devotees and you show them what I have given them. So Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj has started to travel all over the world to show us what Srila Prabhupada left in his books. And he unfolded the beautiful jewel and gift that is there in the books of Srila Prabhupada. Prabhupada gave us the Bhagavad Gita, gave us the Srimad Bhagavatam, and gave us especially the Sri Chaitanya Charitamrita, which is so dear to the Gaudiya Vaishnavas, because that Chaitanya Charitamrita gives the topmost essence of bhakti. That means love of Krishna, and the essence of love of Krishna, which is the love which is there in the residence of Braj, and especially the love which is there in the Gopi, and especially in the art of Srimati Radhika. And that Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami is revealing that the highest object is the service of Srimati Radhika. So that was given by my Guru Maharaj in his books, but he did not elaborate on it. He did not elaborate. He asked especially Srila Narayan Maharaj to reveal the secret and elaborate it and train the devotees. When my Guru Maharaj left this world, he has a great regret, one great regret, that he said, I could not train my devotees personally. But actually, he requested Srila Narayan Maharaj to do it. So Srila Narayan Maharaj went around and started to train with so much affection all the devotees. Of course, first the disciples of Prabhupada, because there was no one else at that time when he started to preach. But then by
natural effect, also many young devotees came, and then he accepted them as his disciples, so he trained them also. So like this, everyone is benefiting so much, and this is the special contribution of that parampara in which we belong. So Bhaktivinoda Thakur was like the architect, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur the engineer, and my Guru Maharaj was like the leader of the contracting company with all the workers working so hard to establish the movement. And then Srila Narayan Maharaj was like the decorator. He made all the decoration. Quality control. Yeah, quality control, but decorator is really beautiful because it's the final touch, making everything beautiful, the topmost finishing, training. Like my Prabhupada writes in the Krishna book that at the end we go to the spiritual world, but the training goes on. There is always training. So Srila Narayana Maharaj was like the end of the final chapter. Now we just have to stop now to practice all what our Guru Parampara has given. So we are in this beautiful, amazing holy place, and we are going to go to Srila Tota Gopinath, where so many beautiful pastimes happen there also. And we hear from Sripad Bhaktivedanta Ban Maharaj about the details of all the beautiful lila here. Jai Vansha Kalpataro Yashtakripa Sindhu Chapatitam Bhavani Yoshna Gurave Gaurachandraya Radhika Vitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vancha Kalpadurvascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavane Vaishnave Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So by the causeless mercy of Guru and Gauranga, finally we have come Jagannath Puri. And first we have come this place of the Bhajan Kutir of Nityalila Prishtam Vishnupad Ashtottara Srimad Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. He was the first established Gaudiya Math and all over the world through his disciples. Actually, he is called the founder and acharya of all Gaudiya temple. Bhakti Vinod Thakur, he brought him Golok Vrindavan. Bhakti Vinod Thakur also, he gave his own identification. I am Kamal Manjari and very near dearest Sakhi of Srimati Radhika. So that means Srimati Radhika, she sent her very nearest and dearest Sakhi Kamal Manjari. But Kamal Manjari thinking, I cannot do alone myself to fulfill the desires of Divine Guru Radha and Krishna. For this regard, she requests to Srimati Radhika, please send another your very nice disciple, Sakhis, Nayan Manjari. So Bhakti Vinod Thakur, she requests to Srimati Radhika. Then Srimati Radhika, she sent Kamal Manjari, Nayan Mani Manjari. Bhaktisiddhanta Prabhupada, he appeared, and Bhaktisiddhanta Prabhupada, he also very nicely helps to him. So there are many sweet pastimes in this place. Because our time is over, time is very short, we have to go to another place, one place to another place, and also discuss about Hari Katha. थोड़ा हिंदी बोलो नहीं तो ये लोग बोलते हैं जी हिंदी में ही बोलते नहीं क्या बोले
हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में फाइनली हम लोग नवदीप परिक्रमा के उपरांत हम लोग जगन्नाथपुरी में आए। ये जगन्नाथपुरी जो है साक्षात राधा गोविंद की भी लीला स्थली भी कहा जाता है। ये कम नहीं है, क्यों धाम अपराकित है। अपराकित धाम में अपराकित लीला आदि होते हैं। हम लोग जड़ आंखों के द्वारा जड़ ने इंद्रियों के द्वारा उसका हम समझ नहीं पाए, क्योंकि वस्तु की समझने के लिए क्या चाहिए, जब अपराकित इंद्रिय चाहिए। विदाउट ट्रांसेंडेंटल सेंसेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल थिंग्स। हाउ रियलाइज दिस ट्रांसेंडेंटल थिंग्स? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत निर्मणम हिसिकेन हिसिकेश सेवनं भक्तिर उच्यते। भक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं, व्हेन यू कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ material designation, upadhi. Then by the causeless mercy of Guru and Krishna, then all your senses will become transcendental. With your transcendental senses, then you can realize the transcendental things. भजन करते करते अपराकित वस्तु की उपलब्धि तब होगी जब हम सर्व प्रकार से उपाधि को हम त्याग दे देंगे। गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ आवर मटेरियल डेजिग्नेशन, उपाधि। व्हाट इज आवर डेजिग्नेशन? फर्स्ट आवर डेजिग्नेशन देहात्म बुद्धि, and I am man, I am a woman. This is called the bodily conception. When your bodily conception, you can't understand the transcendental things. Transcendental things only you can understand by the causeless mercy of Guru and Krishna. Nang atma pravachana labbo no medhaya no bahuna srutino jame vaise brunute tena labbo tasya atma vibrunute tanusama. The transcendental things you can understand. You give the long lecture, if you listen the thousand lives, you read the Ved, Puran, Upanishad, you can understand. How will you understand these things? When Lord mercifully manifest in your heart, then you understand. Dandavad Maharaj, आइए पधारिए, धन्यवाद, आइए पधारिए. So by the causeless mercy of Guru and Krishna, then you can understand these transcendental things. This is very important. How will you receive this mercy? Maybe your question will come. Because the condition is when you receive this mercy from Guru and Krishna, that Lord, He will be manifest in your heart. Then you understand. Then question will come. Now question arise. How do you know? The mercy is coming now. When your seva vritti will come. Seva vritti means servicial mood will come. Servicial mood. If you have no servicial mood, any method, then you cannot understand these spiritual things. आइए महाराज, चलो आ जाओ. आपके लिए सभी बोल रहे हैं, बोले हमारे पास जो लोग बोले आप हिंदी बोलते हैं, हम रसान के पास भाग जाइए, किधर हो गए, क्या करें. आपके पास में से गोरे गोरे सब गोरे, हर पास में काले, आप काले. So transcendental things, and you may understand only by the servicial mood. सेवा वृत्ति जब आपके हृदय में आ जाएगा तो ये वस्तु का समझ सकते हैं. इसलिए एक श्लोक जीवन में याद कर लो. यू हैव टू लर्न वन श्लोक. नांग आत्मा प्रवचन लब्बो न मेधया न बहुना श्रुतेनो जमे वैसे वृणुते तेन लब्बो तस्य आत्मा विवृणुते तनुसाम. विवृणुते तनुसाम means Lord Himself, His body. Tanu means His body manifest in your heart. Then you can understand. So first you need that seva vritti. Everything's in your heart. Don't you think you have nothing? You have everything. You are not. You are something. I am empty. I am nothing. No. You have everything. Nitya siddha Krishna prem sadhya kabu noy.
श्रवणादि शुद्ध चित्ते और उदय नित्य सिद्ध कृष्ण यू हैव एवरीथिंग दैट द पोटेंसी इज देयर श्रवणादि शुद्ध चित्त यह श्रवण आदि श्रवण मीन्स लिसन नॉट ओनली श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन बंधन दास सख आत्मनिवेदन बट हियर इवन यू लिसन नॉट इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नम लक्षणम इति पुंस अर्पिता मीन्स you have to completely absolutely surrender lotus feet of Guru and Krishna, no complaint, as like the disciple of Shankaracharya Gurudev again and again remind to us this katha, you know the story of Shankaracharya disciple Giri. He Govinda we are saying because actually his name is Giri. Giri just he was the clothes of Shankaracharya. शंकराचार्य सेवक शंकराचार्य के सेवक था वो शंकराचार्य के बर्तन धोते थे मूर्ख तो नहीं थे पंडित था वो मूर्ख था ऊपर से मूर्ख था कोई श्लोक पढ़ते शंकराचार्य कथा बोलते थे वो चले जाते थे गुरुदेव के सेवा आदि करने के लिए सेवा आदि करते थे 24 घंटा सेवा में लगे रहते थे कपड़ा धोना गुरुदेव के रसोई बनाना गुरुदेव के लिए वही करता था एक दिन बड़ा सभा में जो है और शंकराचार्य वेदांत के ऊपर भाष्य देने उसके बड़े बड़े सब पंडित थे ऐसे से बड़े धुरंधर पंडित थे जिसका नाम पद्मपाद जो ऐसे जोगी महात्मा थे कमल के ऊपर चलते थे ना कमल जो है ऐसे खिल जाता था जिसके इसका नाम ही है पद्मपाद मैंने पैर रखने के साथ ही साथ जल के ऊपर चलते थे ना कमल अपने खिल जाता था आप कर सकते हो क्या ना हम कर सकते हैं देखो और भी विद्वान भी थे संस्कृत के बड़े बड़े पंडित थे उस समय ऐसा हमारे भाती मूर्ख नहीं था कोई और हस्तमाल नाम भी हस्तमाल जोगी ऐसे था दीवार पर हाथ रखने से दीवार अपने आप चलना शुरू कर देती इसलिए नाम ही उसी प्रकार रखा गया ऐसे पहले नाम रखते थे ना ऐसे नहीं आजकल तो ऐसे किसी का नाम तो सूर्यमुखी रख दो चंद्रमुखी रख दो थोड़ी होता है क्या है ये बोलते हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी अभी तक किसी का नाम नहीं रखा ना ज्वालामुखी नाम रखो सूर्यमुखी का नाम है किसी का सूर्यमुखी फूल है ना सनफ्लावर चलो वो अच्छा है और चंद्रमुखी तो है ही है किंतु उस समय उन लोग के कैसे के नाम ऐसे ऐसे नाम रखते थे और ऐसे से बड़े बड़े धुरंधर पंडित जो लोग जो है उसके सभा में शंकराचार्य वक्तव्य देते थे और एक दिन शंकराचार्य वक्तव्य देने के पश्चात बोले काल मैंने क्या बोला था अथा तो ब्रह्म जी के ऊपर मैंने क्या क्या बोला कोई बोल नहीं पा रहे ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडित और उस समय बोले गिरी कहाँ है और गिरी जब है ना ये तो बड़ी लंबी कथा मैं संक्षेप में बता और वही गिरी जो इसके गोविंद नाम ये बोल रहे हैं और आकर के इतना सुंदर संस्कृत भाषा में बोलना शुरू कर दिया सब देख करके तो पक्का चक्का हो गया सभी व्यक्ति शंकराचार्य के कहने लगे गुरुदेव हम लोग तो ये आपके सेवक जो है क्या नाम गिरी जो है हम तो मूर्ख समझते थे बोलते एक केवल बस उसी प्रकार की सेवा आदि करता है और वो बस कपड़ा धोता है वो कुछ काम का नहीं कैसे शंकराचार्य कहते सेवा के फल है जीवन में एक कस करके गांठ बांध लो जो जितना सेवा करेगा वो उतना ही उसके फल आएगा और जो जितना ही बैठा रहेगा उसके कुछ नहीं मिलेगा इसलिए सेवा ही हमारे परम धर्म है भजन क्या है जो कहते मैं भजन कर रहा हूं अरे भजन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भजन भजन मीन भजते सेवयति भजनम भक्ति कुछ नहीं भक्ति क्या है सेवा वृत्ति तुम्हारे हृदय में जो सेवा वृत्ति है उसके जगाओ कल रात को मैंने समझा रहा था उसके तुम्हारे हृदय में जो सेवा वृत्ति है वो अंकुर यू हैव एवरीथिंग जस्ट टू मैनिफेस्ट एंड चांट होली नेम एंड सर्व गुरु एंड वैष्णव सेवा की वृत्ति जगाओ रात 2 बजे उठकर हरि नाम करो दिन में सेवा करो मैं अहंकार नहीं करूं मैं जब मंदिर में आया था रात 3 बजे उठ करके सारा देवानंद गौड़ी मठ के जो मंदिर के पर इतना बड़ा मैं झाड़ू देता था झाड़ू दे लो सेवा करो घर में है तो घर पे सेवा करो जहां पर है इसलिए मेरे कहने के लिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने यही दिखाया ये जो जितना सेवा करता है यू हैव टू सर्व भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ही टोल्ड अबाउट 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज उन्होंने 5 प्रकार ज्ञान के बारे में बताया एक है प्रत्यक्ष ज्ञान एक है परोक्ष ज्ञान एक है अपरोक्ष ज्ञान और चौथा है अधोक्षज ज्ञान और 5वां क्या है अपराकितो
वृंदावन की ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान हम लोग इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अर्जन करते हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट नॉलेज, एक्सेप्टिंग विथ आवर सेंसेस, दिस कॉल्ड डायरेक्ट नॉलेज। किंतु ये डायरेक्ट नॉलेज जो है कभी कभी भ्रांत हो जाता है, माने भ्रांत माने भूल हो जाता है, क्योंकि बद्ध जीव के जो 4 दोष है। क्या क्या दोष, कौन जानते हो बताओ? देयर आर 4, हाँ बताओ क्या दोष है? भ्रम, प्रमाद, विप्लुप्सा एंड कारण पठक, ये बद्ध जीव के है। और जो मुक्त हो जाता है, मुक्त जीव में ये भ्रम नहीं रहता है। भ्रम क्या है? एक वस्तु के दूसरे वस्तु प्रतीत होना, उसके भ्रम होता है। जैसे अंधकार में आप जा रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ है, उसको आप क्या समझ रहे हो? सांप समझ रहे हो, उसका आप समझ रहे हो सांप है, किंतु तो बत्ती जलाया वो देखा क्या? रस्सी। ये भ्रम हो गया ना, एक वस्तु के दूसरे वस्तु। रजत में सुक्ति भ्रम, सुक्ति में रजत भ्रम हो जाता है। ये समझते हैं। हमारे पहले भ्रम क्या है? शरीर में देहात्म बुद्धि राग। हम शरीर को आत्म शरीर, आत्म शरीर में दोनों अंतर है। इसलिए तो महाप्रभु कहा ना हम विप्र न चनपति, इस श्लोक ही कहते जा रहे हैं। हम गोपीभूत पद कमलो दास न दास। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद पहले नॉलेज के कह रहे क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान में दोष रहता है। परोक्ष ज्ञान जिसको कहा जाता है स्वर्गीय ज्ञान, जिसको कहा जाता है द नॉलेज ऑफ द हेवन। वी डिड नॉट सी द हेवन बट वी हर्ड इन शास्त्र एंड गुरु heaven, heavenly planet, a very nice beautiful ladies are there, themselves they are nandan kana amrit bhojan in their transcendent, in their the heavenly planet. That is a paroksha. Aparoksha gyan, that is the knowledge of Brahma, Brahma gyan. Then fourth, that is called adaksha, adakritam akshaja gyanam iti adaksha gyan. वो क्या है? वैकुंठ ज्ञान, the knowledge of वैकुंठ। यही है, इसको जो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे भजन करते करते। और पांचवा ज्ञान क्या है? व्हाट इज द 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज? दैट इज कॉल्ड अप्राकृत सिद्ध ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल। अप्राकृत, प्राकृत बत न तू प्राकृत। शिला जी गोस्वामी पाद भी इसके ऊपर भी कहीं कहीं भी लिख टीका में लिखा है, प्राकृत बत, देखने में प्राकृत भांति है, लुक लाइक मटेरियल बट दैट इज नॉट मटेरियल, ट्रांसेंडेंटल। जैसे यहाँ पर गोप, गोपी, गाय आदि जो कुछ भी देख रहे हैं, और जब वहीं पर जाओगे वहीं पर भी देखो उसी प्रकार की है। जैसे बृहद भागवत सनातन को समझ, जब गोप कुमार वहीं पर गए, देख करके वो तो हैरान हो गया, बोले इधर जो देख रहे वहीं पर सब कुछ है। इसी के कहा जाता है अपराकृत ज्ञान। ये अपनी दिस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। Transcendental knowledge you understand this way by the causeless mercy of Guru and Krishna. So Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, he preached these things. How we will understand the knowledge of Aprakrita Gyan. That is called Golok Vrindavan Katha. So we have come here. They pray to lotus feet of Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, who established the Gaudiya mission all over the world. जिन्होंने समस्त विश्व में जो अपने अपने शिष्यों के द्वारा इतने मंदिर स्थापना की। इसी के जानना है। यही है चट, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसको कहा जाता है क्या? चटक पर्वत कहा जाता है। इस चटक पर्वत क्या है? ये पहले जो है बालू के जो है ढेर था, विशाल जो है। आगे जाकर कथा बोलेंगे। इसको देख करके चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा से इधर तरफ आते थे, क्या बोले, जमेश्वर टोटा, आई टोटा, इधर होकर जब आते थे, चैतन्य महाप्रभु और राधा जी के भाव में विवाहित होकर के लोटपोट खाते थे। इसको गिरिराज गोवर्धन समझते थे। और वहीं पर बंसी बट वृक्ष जो है वहीं पर था, पहले वो सूख गया शायद आजकल। और ये निकट समुद्र के जो है उन्होंने क्या समझते थे? जमुना। और चैतन्य महाप्रभु सी भाव में विवाहित होकर के श्लोक आदि उच्चारण करते थे, वेणु गीत, जुगल गीत, ये श्लोक आदि करते थे। ये स्थान बहुत दिव्य अपराकृत स्थान है, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं। अभी हमारे महाराज श्रीधर महाराज बोलेंगे बहुत सुंदर कथा। हम अरे यही तो बोल रहा हूँ, प्रभुपाद का अष्टक बोला है क्या? प्रभुपाद अष्टक बोले हाँ। और कृष्णदास प्रभु जी इधर आ जाओ, थोड़ी इधर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।